एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एज यू ऑलरेडी नो, yesterday we have completed chapter number 4 in geography subject geography class 7th. Today we are going to start chapter number 5, that is weather and climate. Today we will discuss what is weather and what is climate. First of all, we are going to discuss what is weather. The day to day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. The temperature, humidity, rainfall, snowfall, wind speed are called the elements of the weather. Day to day condition of the atmosphere is called weather. टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, स्नोफॉल है, विंड स्पीड है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। इनको हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहते हैं। द वेदर एट अ प्लेस चेंजेस एवरी डे। समटाइम्स इट इज़ मोर वार्म, more humid, more cloudy, more windy. Sometimes it is less warm, less humid, less cloudy, less windy. It may rain for an hour in the morning and then become sunny and clear right after that. Now, in simple words, we can say that the day to day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed is called the weather at that place. The temperature, humidity, rainfall, snowfall, wind speed are the elements of the weather, are called the elements of the weather. The weather at a place changes every day. Sometimes it is more warm, more humid, more cloudy, more windy. Sometimes it is less warm, less humid, less cloudy, or less windy. It may rain for an hour in the morning and then become sunny and clear right after that. Now, this was all about what is weather. Now, second one is what is climate. Climate of a place is defined as the average weather condition at a particular place over a long period of time, about 25 to 30 years or more. Average weather condition of a particular place over a long period of time, 30 years or more, that is known as climate. क्लाइमेट को हम डिफाइन अगर सिंपल वर्ड्स में करें तो एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस इज नोन एज क्लाइमेट। अगर वेदर को करें, वेदर जो है डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर एंड द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ दैट प्लेस इज नोन एज क्लाइमेट। क्लाइमेट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो क्लाइमेट है ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज हॉट for most of the days and if there is more rainfall, then we say that the climate of the place is hot and wet. For example, जो केरला का climate है वो hot और wet है। If the temperature at a place is hot for most of the days and if there is less rainfall, अगर किसी जगह का temperature जो है hot है एंड जहाँ वहाँ पे बारिश बहुत कम, लेस रेनफॉल हो रहा है, वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड ड्राई। फॉर एग्जांपल, जो राजस्थान का क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई है और केरला का क्लाइमेट हॉट एंड वेट है। सिंपल वर्ड्स में हम वेदर और क्लाइमेट को कैसे डिफाइन करें? द डे टू डे कंडीशन, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर एंड क्लाइमेट, the average weather condition of a place is known as climate
which is usually measured over a period of 30 years or more. Okay, thanks. Have a nice day.